and welcome to you. The first lecture of the second lecture is done, and welcome to the third lecture of building construction. Right? So, without further ado, let's begin. There was a question as dado is usually provided. So, what is meant by dado? First of all, we have to understand that what is dado, right? So what is dado? In the architecture, the dado is the lower part of a wall, below a dado rail and above the skirting board, right? The word is borrowed from Italian meaning dice or cube and refer to die. For the architecture term for the middle section of a pedestal or plinth, let's discuss the dado. Well, there's a, you can see this is called basically skirtings, right? Yeah, if, this is basically called skirtings. Uh, yeah, this area, but sometime it is also called as dado, right? Yeah, it's also called dado. So that's also called as dado, like you can see, like this is skirting board. Uh, this right here is a skirting board, right? And this is dado top rail. So this is called dado. This is also called dado, right? So it is used for architecture purpose, and also it is provided for the lower part of the wall, which is not getting dirty. This lower part of the wall below the dado rail and above the skirting board. This lower part is called, yeah, this lower part is called, this part is called dado. Sometimes it's also called skirtings. Like let me show you the skirtings. Like in this case, it says skirtings. Like you can see, this is also called dado and skirtings, right? In this case, this is dado, right? Yep, this is dado. So what is the difference between dado and skirtings? So basically, the dado is, if I'm talking dado, right? Yeah. If I'm talking about the dado is actually that part of the wall, which is below the dado rail, right? And above the skirting, board, right? People are usually doing mistake in skirting and dado. Skirting and dado are not same thing. Yeah, both are different things. Skirtings are running bottom part of the wall. That might be chips, that might be a marble, that might be a tile. Usually below waist height. Below waist height is, if I can see that, the below waist height, yeah, below waist height is actually dado. This is actually dado, okay? And skirting is the bottom part of the wall running along the base. Bottom part, yeah, it's the bottom part, right? It's the bottom part along the base. So skirting are always at floor level, right? Which we are going and taking steps. And dado are around hip level. So that's the important difference between dado and skirting. Okay. All right. Let's move to a picture to show you the best manner and picture as well. That's the Basha skill from the painful heart of Basha, which is given to you. Pray for me, for my success, for my health. It's indicating in the picture that if I see this is skirting,
and this is dado rail. So this portion is actually the dado, right? And it's used for architectural purposes, aesthetics purposes as well, and different other purposes. We'll make some other video on that in future. And of course, one of the purpose is that sometimes children come out to rooms, or if we have applied paints or distemper, so they're putting the dirty hands or throw something on that. So around a hip level height, it's called dado. So that portions are mostly the portion where the children heights are lesser than that grown up man or woman hip level height. Mostly the children height of that, so they cannot makes this wall dirty. So that's a special thing. मतलब बच्चों की ज़्यादा हाइट हिप लेवल की ही होती है, तो वो उसी लेवल में नीचे या उसी लेवल में उस दीवार को गंदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डेडो को हम यूज़ करते हैं, जो कि टाइल्स भी हो सकते हैं और मार्बल भी हो सकते हैं, और कोई अदर टेक्निक्स भी होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस. If I talk about the dado and the washroom, so let be clear that this is car skirting, which is the running tiles at the base of the floor, and this is called this portion. This is called marbles, tiles, right? And what about the dado? This is the dado. This portion is called the dado, right? Yeah, right here, this portion, this is the dado rail, and this is the skirting top. So this portion is dado, right? It's also provided in washroom as well. Okay, and some of, if I look around in this portion, this is dado, right? For, of course, for aesthetic as well and other purposes I described. Now this is a wall. Here you can see as actually I cropped that, but you can see this is where the wall started, and this is right here. This is dado rail, and this is skirting top, right? So this portion is dado, right? So it's also used for aesthetic and beautification purposes, and also not to that lower part of the wall around a hip height makes getting dirty. As seen in the picture, that's the skirting and that's the dado. So according to this software, this page, this application, they're assuming that dado is usually provided in bathrooms, but these days it can also be used, it can also be used in if I can say dining halls and living rooms as well, right? It can also be used, but this was the correct answer according to the situation. Okay, another application of the dado is that it resists against the water. How? Because we can easily see that the dampness come in the form of capillary action, so called the paints and distemper to be dampened, right? And that corrosion dampness can occur and it can damage your paint, so it is also to resist the water. One more thing, that if a dado is actually provided around or 30 centimeter height in a wall, then it's called dados, right? Then it's called dado. So dado is provided in bathroom because is it seepage of water. असल में बाथरूम में अगर हम देखें तो हमेशा से
पाइप्स जाते हैं। अब पीवीसी पाइप्स क्या होता है, यूपीवीसी क्या होता है, पीपीआर क्या होता है, अगर आप इतने काबिल हैं तो इसको आप एक्सप्लेन कर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और जीआई पाइप्स कौन सा होता है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो बाथरूम में हमारे साथ सीपेज होते हैं, तो सीपेज जब होती है तो असल में उधर भी हम डेडो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डेडो हम उधर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि नीचे फ्लोर से या अगर कई जगह पे हमारे साथ अगर वॉल में या जहाँ पे हम डेडो लगाते हैं जो लोअर पार्ट होता है उधर अगर हमारे साथ कोई सीपेज हो तो वो सीपेज डेडो की वजह से बाहर सरफेस पे नहीं आएगा, डिस्टेम्पर या छूने पे या पेंट पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके पेंट या डिस्टेम्पर के ऊपर तो हम डेडो लगाए होते हैं, हमने मार्बल स्टाइल से डिज़ाइन किया होता है, इसको हम डेडो कहते हैं। और डेडो जो है आर रेल्स दैट आर मोस्टली पुट इन द सिटिंग रूम टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द काउचेस विद द वॉल। कभी कभार हम जो काउच का जो हाल होता है इससे पहले मैंने 30 सेंटीमीटर की बात की बुलेट नंबर सेकंड में इस पेज पे। तो अगर 30 सेंटीमीटर में अगर देखूँ तो अगर मैं 30 सेंटीमीटर को अगर मैं 2.54 से डिवाइड करूँ तो ये 11 इंच होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 फुट होता है ना, ठीक है। तो फुट के मुकाबले में अगर मैं मतलब इसको अगर इससे ज़्यादा मैं अगर ऊपर में टाइल प्रोवाइड करूँ तो ये डेडो स्केल आता है। तो से अगर यही डेडोज है, चाहे अगर 40 सेंटीमीटर हो, 35 हो, 30 सेंटीमीटर पे लगाए, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर उस केस में जो हम कुछ कुशन काउचेस रखते हैं, जो सोफ़ास रखते हैं, तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द वॉल, तो वो फिर जाहिर सी बात है पेंट को भी गंदा करते हैं, स्क्रैचेस भी लाते हैं। एंड अदर वर्ड्स दे प्रिवेंट द काउच या चेयर फ्रॉम डैमेजिंग द वॉल। सिंपल, दीवार को महफूज करने के लिए हम डेडोस लगाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन कि वो फाउंडेशन जो हम क्या करते हैं जिसमें हम कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन 4, ठीक है, जिसमें हम कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं टू जॉइन टू फुटिंग्स को जॉइन करने के लिए, 2 फुटिंग्स को जॉइन करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग। ये तो मैंने कई दफ़ा इंटरव्यूज़ के लिए पढ़ा है। जो बेवकूफ़ जो लोग होते हैं, एक कभी कभार आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछते कि आप उसका इरादा है कि आपको फेल कर क्योंकि उन्होंने किसी और को लेना होता है, तो ये स्ट्रैप फुटिंग है, ठीक है। I'm referring to the structure guide. So if I can look to this, so this is a mesh inside the footing. I mean this is if for instance if I talk about this portion, if I cut this in the middle and if I talk about only this portion, if I target only this portion, so this is a single isolated footing. तो इसमें ये जो है ये mesh लगा है, ठीक है, नीचे मैश है, फिर इसको बेंडिंग वाइट से टाइट किया होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे इसके हुक्स आए होते हैं, ठीक है, ये भी हुक्स है और इस हुक्स को नीचे मैश के साथ बांध दिया जाता है। फिर इसमें लेटर टाइज जिसको रिंग्स कहा जाता है वो लगाया होता है और इसकी अपनी हाइट होती है अकॉर्डिंग टू मतलब जो हाइट इसकी ड्राइंग में मुख्तस की होती है, ठीक है, डिज़ाइनर ने, तो उसको स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैप फुटिंग में असल में क्या होता है कि हमारे साथ ये बिल्डिंग फाउंडेशन कंपोनेंट है, ठीक है, हाँ जी, बिल्डिंग फाउंडेशन का, ठीक है, या तो ये बिल्डिंग फाउंडेशन का कंपोनेंट है, तो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन, ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग। बिल्डिंग फाउंडेशन क्योंकि फाउंडेशन के मुख्तलिफ अक़साम होता है, एक फाउंडेशन तो नहीं होता हमारे साथ, उसके तो हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इसको हम कंबाइन फुटिंग भी कहते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। स्ट्रैप फुटिंग को कंबाइन फुटिंग भी कहते हैं और इसमें 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम होंगे फुटिंग्स के 2 या 2 कॉलम तो होंगे लेकिन फुटिंग के कॉलम्स होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब यहाँ पे एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो ये वाला है
और ये वाले है, तो दो कॉलम थे, लेकिन ये कॉलम्स किस चीज़ के हैं? ये कॉलम फुटिंग के कॉलम्स है, ये फुटिंग से नीचे आया होता है, ठीक है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कनेक्टेड बाय कंक्रीट बीम, तो बीच में जो बीच में क्या होता है? बीच में कंक्रीट बीम होता है, ठीक है। ये कंक्रीट बीम है मेरे साथ, ठीक है, ये कंक्रीट बीम है। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल of that. It's a little bit blurred, but this is a concrete beam, and this is this is isolated footing, right? This is footing, and this is another footing, so it's been connected by these two footings are connected by this concrete beam. So this is called strap footing, right? ठीक है। इसके अलावा इसको हम स्ट्रैप बीम भी कहते हैं। कंक्रीट बीम तो है, लेकिन इसको स्ट्रैप बीम भी कहते हैं, ठीक है। जो दो फुटिंग्स के दरमियान जो बीम है हमारे साथ, तो इसको मतलब अगर ये एक फुटिंग है, ठीक है, तो अगर ये बीम जो है, तो ये बीम मेरे साथ क्या है? ये बीम एक्चुअली मेरे साथ है स्ट्रैप बीम, ठीक है। या दिस बीम इज एक्चुअली द स्ट्रैप बीम विद मी, ठीक है। सो इट इज used to help distribute the weight of either heavily or eccentrically loaded column footings to adjacent footings. मतलब इसका काम क्या होता है? इसका काम कि जो हमारे साथ जो हेवी या हेवीली वेट होता है, ठीक है, या जो eccentrically लोडेड कॉलम होता है फुटिंग्स का, तो वो एडजेसेंट फुटिंग्स को क्या करता है? वेट को, वजन को, बिल्डिंग के वजन को, स्ट्रक्चर के वजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर फाउंडेशन से नीचे ज़मीन की तरफ जाता है, जो नेचुरल अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। अब अगर इस केस पे मैं देखूँ तो ये स्ट्रैप बीम है, ये कॉलम फुटिंग है, ये सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है, सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग। ये कॉलम फुटिंग है और ऑफ कोर्स ये कॉलम है, लेकिन ये फुटिंग अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट इसके हाफ जितना है, ठीक है। या ये जो लेंथ है, ये इसकी हाफ, तो इसको हाफ में काट, तो ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट, तो ये एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग है। तो इस केस में ये क्या करता है? इस पे जो ऊपर से लोड आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है, ये इसको कॉलम लेता है, इस फुटिंग में जाता है, ठीक है, जो कि एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग है। और ये क्या करता है? फिर ट्रांसफ़र करता है इस वाले एडजेसेंट को, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ अक्सर एरिया का मसला होता है, या यहाँ पे हमारे साथ स्पेस नहीं होता, ठीक है। इस जगह पे हमारे साथ अक्सर क्या होता है? ये जो पोर्शन है स्पेस नहीं होता, एरिया का मसला होता है, तो यहाँ पे हम फुटिंग हाफ प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, जो कि एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग होता है। क्योंकि एसेंट्रिकली क्या मतलब है, इस पे मैं समझाऊंगा, वेरी सून आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर मैं देखूँ तो ये कॉलम का जो सेंटर एक्सिस है, ठीक है, ये, ठीक है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है? आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो स्ट्रैप फुटिंग का मतलब ये है कि जो मेरे पास जो बीम है जो कनेक्ट करते दो आइसोलेटेड फुटिंग्स को, ठीक है, लेकिन वो आइसोलेटेड फुटिंग्स में से एक एसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इक्वल डायमेंशन की फुटिंग ज़रूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। यानी मतलब अगर एक फुटिंग का साइज़ ये है तो एक फुटिंग का साइज़ ये होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये वाले जो हैं ये एसेंट्रिकली लोडेड होगा, ठीक है, यस, ये एसेंट्रिकली लोडेड होगा, ठीक है। और ये फुल आइसोलेटेड फुटिंग का बेस होगा, बुनियाद होगा, फाउंडेशन होगा, ठीक है। तो इन बिटवीन फॉर द शेयरिंग द मैक्सिमम लोड कमिंग फ्रॉम वन कॉलम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट लोड बिटवीन टू आइसोलेटेड फुटिंग्स, मतलब जो जिस कॉलम्स पे लोड आ रहा है तो एक दूसरे के आइसोलेटेड फुटिंग्स को वो क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, ठीक है। इसको हम स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं, ठीक है। जिस तरह इस पिक्चर में अगर हम देख लें तो
यहाँ पे हमारे साथ जो एक कॉलम है, ठीक है, जो ये वाला फुटिंग है ये, ठीक है, ये इसमें कॉलम क्या है, इस फुटिंग के एज पे है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो ये अगर मैं इसको इधर से काट लूँ तो इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग में मेरे पास कॉलम एच पे होगा, ठीक है। और जो दूसरा है, जो दूसरा मेरे पास जो फुटिंग है, ठीक है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। हाँ, ये जो फुटिंग है इसमें मेरे साथ कॉलम जो है वो सेंटर पे होगा, उसके सेंटर ऑफ एक्सिस सेंटर पे होगा, जबकि इसमें इसका सेंटर ऑफ एक्सिस सेंटर पे नहीं है। इसका सेंटर, कॉलम का जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, अगर इसकी मैं सेंटर ऑफ एक्सिस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ एक्सिस की बात करूं तो इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस सेंटर पे नहीं है, क्योंकि ये तो कॉलम एच पे है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे साथ एसेंट्रिसिटी होगी। ये एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग है। तो ये फुल कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग भी हो सकता है, और ये एसेंट्रिकली आइसोलेटेड फुटिंग भी हो सकती है। फुल कॉलम फुटिंग भी हो सकती है, एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग भी हो सकती है। उसके बीच में स्ट्रैप, इसके बीच में जो मेरे पास है स्ट्रैप बीम है और ऊपर कॉलम्स है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैप फुट। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि कॉलम एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग के एच पे आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये एसेंट्रिकली लोडेड आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है, ठीक है।